1 घंटा पहले जी देख लीजिए, बंद कर दीजिए, पूछ लीजिए, देख लीजिए कोई। स्टॉप स्ट्रीमिंग कर दीजिए। साउंड, हेलो 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 हेलो, यस। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, सो और लेट आएंगे लोग। So we are doing India Pakistan. Anything you want to ask? Start our discussion class. Have task related to इस वॉर के बेसिस पे था। 1965 वॉर जब और ताशकंद 1960। So we have seen that India and Pakistan has first war in 1948, ठीक है। तो फिर 1949 का यूएन रेजोल्यूशन होता है, राइट। So this leads to the 1949 resolution when India went to the UN for the ceasefire. Then again the next war is 1965, and this war leads to the Treaty of Tashkent Treaty in 1960. Tashkent Treaty 1960, where Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister, and he agreed the terms with the Pakistani counterpart. Now we should stop and we should not interfere in each other's territory. We should respect boundaries, ठीक है, और हम कोई military actions नहीं करेंगे. All has been done. This is Tashkent. Now important is Shimla, and you have written. After this, the next was 1971 war, liberation of Bangladesh war, and India has helped the Bangladesh Mukti Bahini. This all we have discussed in the India-Bangladesh relations. How in LOC नए बाउंड्री का डिफाइन हुआ था जब 47 में, जब पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था इंडिया से, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान में थे, जो आज बांग्लादेश है। 1971 में बांग्लादेश नई राज्य बनती है, दैट इज फ्रॉम कार्विंग आउट ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। तो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नए बाउंड्री LOC का हुआ, क्योंकि दैट बिकम अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो 1971 Bangladesh war liberations, and this was resolved through the 1972 Shimla agreement. Okay. इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो एग्रीमेंट थी कि prisoners war of prisoners, they have been released, right? Then there are demarcations of boundaries between India and Pakistan, new demarcation. Reason we have seen, because now the new nation is emerged, Bangladesh. Those consequences have also. This is the third war in 1970. Then the next war happens in 1919, when the Gujarat Doctrine has, or the Gujarat Doctrine we have discussed, the Gujarat Doctrine in 97, he came into the power, yes or no? And then he has propounded a Gujarat Doctrine, and on the Gujarat Doctrine he said that if the neighbor step one step forward to us, we will take a yard. और उन्होंने फिर रॉ को वापस बुला लिया. All activities of the raw in the Pakistan has been stopped. In 98-99, when Bajpayee government came, right? So he started a bus service, friendship bus service. So because of the Gujarat Doctrine,
repercussion of Gujarat Doctrine, which the 1999 Kargil War. Yes or no? It started in May till July. So there is a Kargil War. Then next attack is 2008 Mumbai attack. Before that, there was an agreement between Prime Minister Manmohan Singh and counterpart of Pakistan. Then the next is Uri. एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं था, उसमें ये था कि 2008 में जो 26/11 हुआ था, तो earlier the Pakistan was not accepting that they have been generated from our territory, but pressurizing from the India, they have accepted those terrorists who came to India, attacked in Mumbai. So Pakistan earlier was saying this is not from our territory, but after pressurizing an Indian proving the evidence, इसीलिए हमने कसाब को जिंदा पकड़ा था, that we need to prove that he belongs to the Pakistan and he has been trained in Pakistan. So all the proof has been given. Then Pakistan accepted, yes, वो हमारे यहाँ के थे और some terrorist group has trained them and sent them, and so we will take an strict action against those groups, militant group जो होती है, ठीक है. Then the next incident was pre-attack, and before that there was an also an instance of beheading of Raj मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दौरान. हेमराज का वहाँ बॉर्डर पर गर्दन काट करके फेंक दिया था हेमराज. That incident happened. Then Uri attack. After the Uri attack and after this Bombay attack or 26/11, India has said that the friendship at the one hand, a dialogue, and terrorism cannot go to. But back channel diplomacy continued. After Uri attack, the back channel diplomacy was actors, cricket players. This was happened. Still, we have not been in dialogue or touch with the diplomatic relations established with Pakistan. अभी तक ऐसा कुछ नहीं. अभी देखिए SCO में भुट्टो आया था, वो या फॉरेन मिनिस्टर. So they only keep on talking on Kashmir, right? 2019 the India has abrogated the 370, right? So that is also because the contention dispute the two nations, right? So India demand first you should eliminate the terrorist group, or India has propounded a theory that Pakistan is a breeding ground for terrorism. They are training. Anything else? So we are writing related to the last we have written the Simla agreement. So next is Operation Meghdut. मेघदूत आप बताइए व्हाट इज मेघदूत. व्हाट इज दूत? डिप्लोमेट. और मेघ इज बादल. बरसो रे मेघा मेघा बरस. मेघदूत. द ऑपरेशन इज मेघदूत related to Siachen. So the operations done for the Siachen, Operation Meghdut. In 1984, brought the Siachen Glacier under India's control. Operation Meghdut in 1984. This is Siachen Glacier. In 1984, the Meghdut, this Siachen Glacier is under the control of India's control.
अब आप देखिए, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अ कंटेंशन NJ9842 एंड दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। जम्मू एंड कश्मीर का ये पार्ट जो है दैट इज अ सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ भी इंडियन मिलिट्री इज स्टेशन आर्मी, राइट। तो इनका क्या कहना है, द इंडियंस पोजीशन इज दैट फ्रॉम मैप NJ9842 the delimitation line run along the Saltron Ridge, this line called AGPL, यहाँ से यहाँ तक is India's claim. This is AGPL, Saltron Bridge. ये जो ब्रिज है ना, ये आपको दिख रही है रेड लाइन, yes or no? This is Saltron Bridge. Troops withdrawal is only possible if Pakistan accept that the present position belong to, यहाँ से तो ये लाइन है ना, this belongs to this is an claim of India that this from this part Siachen is our, right. अब पाकिस्तान क्या क्लेम करता है, that the delimitations line should run eastward from NJ9842. इसका कहना है कि eastward joining with the Karakoram range, right, eastward चलेगा, this is Karakoram range, Karakoram pass. तो ये यहां से होने चाहिए, ऐसे पाकिस्तान का क्लेम है, are you getting or not, right. Then consider the present position along AGL held by the Indian illegal. इसका क्या कहना है कि ये जो इंडिया हेल्ड कर रहा है दैट इज इलीगल, पाकिस्तान पोजीशंस यहां से यहां तक ज्वाइन कीजिए और ऊपर जितना आएगा दैट इज ऑल अंडर द पाकिस्तान टेरिटरी, द क्लेम ऑफ पाकिस्तान related to Siachen. So that 1980 मेघदूत ऑपरेशन, Siachen is the control of. तो यहां से जो सियाचिन है इंडिया के कंट्रोल में 1984, ये पोर्शन जो है वो सियाचिन उसी में खड़ा किया हुआ है, गेटिंग और नॉट, समझ रहे हैं। उनका कहना है पाकिस्तान का कि इस लाइन से इस लाइन तक, यहां से जो लाइन आप यहां कनेक्ट करें दैट इज बिलोंग टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान क्लेम लाइन फॉर पाकिस्तान। इंडिया दैट फ्रॉम दिस टू दिस इज अ AGPL साल्ट्रोल रिज, ये पूरा इंडिया का क्लेम में है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे अगर होता ये भी पाकिस्तान में आ जाता along with this, but India has says that this, यहाँ से देखिए ऐसे, this part it is an Indian. Siachen is under the Indian control, मेघदूत operation, but still Pakistan says that it is an illegal, और इंडिया कहना है कि हम ट्रूप्स तभी विड्रॉल करेंगे वहां से जब पाकिस्तान क्या करेगी, accepted the present position of India in the Siachen. Are you getting the point? नहीं समझ, एक पॉइंट है सियाचिन, इंडिया का जो क्लेम है, जो कंट्रोल है इस पॉइंट इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट्रोन रिज नेम साल्ट्रोन, AGPL नेम गिवन। इंडिया कहती है कि यहां से ये साल्ट्रोन रिज को कनेक्ट कर रहा है, इसके बाद का दैट इज एन इंडियन ऑक्यूपेंट और इंडियन क्लेम, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। बट इस पोजीशन पाकिस्तान क्या कर रहा है, इलीगली बता रहा है कि दैट इंडिया हैज होल्ड इट इलीगली। नाउ पाकिस्तान क्लेम कि फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ सोर्स, फ्रॉम दिस which line, straight line joining the Karakoram range, इसके बाद का जितना एरिया है दैट इज एन इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपेंट, दैट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज अ क्लेम ऑफ पाकिस्तान कि हमारा है, राइट। तो इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया हैज स्टेशन ट्रूप हियर, आप बहुत बार सुनते होंगे दैट इन सियाचिन द आर्मी इज स्टेशन्ड, राइट। तो इंडियन ट्रूप्स गार्डनिंग दिस सियाचिन ग्लेशियर, why? Because India said
we will withdraw the troop from the Siachen only if Pakistan accept the India's position. अच्छा ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये है वो आपका ही है, इधर आपका ही, हमारा उस पर कोई भी लीगली ऑक्यूपेंट नहीं, then India will withdraw the troops. 2 troops it is controlling. ठीक है, now is it? ठीक है, चलिए. So and this has been done through the Operation Meghdut 1984. That end. इंडिया को क्लेम करता है. लेकिन इस टेरिटरी को पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है कि ये इंडिया का टेरिटरी नहीं, पाकिस्तान का टेरिटरी है, इंडिया ने इलीगली उस पर ऑक्यूपेंट किया हुआ. जैसे काला पानी का इंडिया नेपाल काला पानी हमने देखा ना, काली रिवर से वेस्ट साइड में काला पानी, तो काला पानी को नेपाल भी क्लेम कर रहा है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल, बट ड्यू टू द डिमार्केशंस ऑफ ब्रिटिशर्स अ बाउंड्री ऑफ टीपू लेक से होता हुआ जो गया, so that say that come under the India. So boundary this is a boundary dispute. अगर ये पूरा का पूरा जो है ना, ये देखिए मैं आपको पीओ का दिखा रहा हूँ. दिस इज पीओ, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, yes part, this is पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. ठीक, अब ये जो पार्ट है ना, ये अक्साई चीन वाला एरिया आ गया चाइना के, दैट इज चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दिस वाज seceded to China. This is also China occupied Kashmir, China occupied Kashmir के थ्रू. मैं पूरा आपको मैप समझ. दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक. Now if we see that this is पीओके इलाका, जहां से लाइन क्रॉस कर रही है, दिस पार्ट is ceded to China from Pakistan. तो 1948 में अटैक के थ्रू फायर और स्टेटस को एस्टैब्लिश की थी, जहाँ वहीं रुक जाए. इसी दौरान 1940 कश्मीर का पोर्शन पाकिस्तान एंटर कर चुकी थी, तो वो आ गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड को सीसी चाइना को और सी. इससे सोवरेनिटी थ्रेट भी है इंडिया को और सिक्योरिटी थ्रेट भी है, तो हम सब सीईसी के अंदर में लिखते हैं. क्या क्लियर है? डाउट्स? So we have seen the Siachen. That's why it is known as a Pakistan occupied. Is under the control. Yes, India control. Yes, yes, yes. देखिए ये जो रिज है, आप यहाँ देखिए ये जो रिज है सेल्ट्रॉन रिज, ठीक है, AGPL. दिस इज एन NJ पॉइंट, NJ98. अब ये कोई हैबिटेंट है नहीं, पॉइंट नेम इज गिवन, ठीक है. तो इस एरिया से इधर इंडिया का क्लेम है. अब इस रीच के जो वेस्ट साइड में है दैट इज पीओ. राइट. if suppose that if it goes to Pakistan from this, अगर पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है इट मीन पूरा पोर्शन पाकिस्तान में आ जाएगा. yes or no? if Siachen glacier come under the control of Pakistan, or it mean if Pakistan point is accepted, it means this has been claim of Pakistan, right? But India has claimed this and kept under the control through the Operation Meghdut, यानी पीओके यहाँ से प्रतिबंध. सॉरी, हाँ
1948, 1984, हाँ, रीच ओवर क्रॉस, हाँ। आप क्या कह रहे थे? टाइगर नहीं, हाँ वो नहीं, वो है, वही मैं कह रहा हूँ कि और इसी पे 1999 में यही पोर्शन पे तो हमला हुआ। 1984 के एग्रीमेंट के बाद, मेघदूत ऑपरेशन, मेघदूत एग्रीमेंट, नॉट ऑपरेशन मेघदूत, बाद पाकिस्तान ने इसको क्लेम करने के लिए अटैक किया था 1919। जितने वॉर हुए थे सब 1999 में, सियाचिन ग्लेशियर, टाइगर हिल और for that. So from there it has been come under the control. Is that clear? कश्मीर कहाँ है? ये तो कश्मीर है, हाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ कश्मीर है। That is also part of Kashmir. कम ही है लेकिन है अपना ही, ठीक है। इज दिस क्लियर? एनी मोर डाउट्स? चलिए लिखिए। तो ऑपरेशन मेघदूत in 1984 brought the Siachen glacier under India's control. In 1988 there was an agreement between the two countries. 1988 there was an agreement between the two countries that neither side दोनों में से कोई भी नहीं, that neither side will attack the other's nuclear installation or facility. That neither side will attack the other's nuclear installation or facility. ठीक है, मीन्स दोनों में जो, दोनों कंट्रीज के जो भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन पे अटैक नहीं करेगा कोई भी नेशन। नेक्स्ट पॉइंट, since 1992, next point, since 99, now this what we are writing actually, India's relations, a dialogue, disruption, dialogue. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, yesterday in the last class we have started writing them that between the India and Pakistan the relation is not smooth, it goes through the phases of dialogue, then there was an attack, war, so this, it disrupts the dialogue, then again after that started a dialogue. yes, कि हम नहीं करें तो उस पर मानने के लिए भी तो उन्हें मानना पड़ेगा ना। the Pakistan has to till the time they have adhered to this diplomatic, फिर भी वो कर नहीं पाएंगे, that's a different thing. Next, since 1992 India and Pakistan have exchanged list of India and Pakistan have exchanged list of their respective civilian nuclear related facility, list of their respective civilian nuclear related facility. सिविलियन न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटी, ठीक है, यानी दोनों के पास न्यूक्लियर लिस्ट है, इंडिया के पास कहाँ कहाँ है एंड पाकिस्तान के पास कहाँ, तो अगर पाकिस्तान अटैक करते हैं तो इंडिया पूरा बर्बाद कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट, in 1991 the two countries, that is India and Pakistan, signed an agreement in 1991 the two countries, that is India and Pakistan, signed an agreement on providing advance notification of military exercise,
provide advance notice of military exercise, maneuvers and troops movement. Exercise जो इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज करता है विद अदर नेशन लाइक सूर्य किरण, दोस्ती, yes or no, right? So this that has to be informed in advance that we are practicing military exercise with the other nations. Pakistan is also doing a military exercise with other nations. That has to be in advance given a notifications, right? Then if there is any troop movements, that also has to be informed in advance. Then maneuvers, MANO EUVERS, maneuvers. So this has to be informed by, since 90 they are informing, right? Next, movement, strategic movement अगर कोई कर रहे हैं आप, ट्रूप्स मूवमेंट, अब अगर टैंक लेके जा रहे हैं वहां मूवमेंट कर रहे हैं, व्हाई यू आर मूविंग, यू हैव टू जस्ट, देयर इज एन एग्रीमेंट दैट बोथ पार्टी हैज टू इन्फॉर्म in advance. Now we are moving or conducting any military exercises, right? We have seen certain military exercise. We will also see military exercise with the Singapore, US, UK. There are many lots of military exercise India is doing every year. उत्तराखंड में भी होता है military exercise. तो वो दोनों को एडवांस में, there is a treaty between them. ठीक, नेक्स्ट. नहीं उनके ऑफिसर, किनके, उनके ऑफिसर्स क्यों आएंगे? एक्सरसाइज हम जैसे इंडिया और नेपाल, सूर्य किरण, तो इंडिया नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, दैट हैज टू बी इन्फॉर्म कि नाउ दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड. जैसे उत्तराखंड क्यों करेगा? उत्तराखंड में एक्सरसाइज होता है, प्लेसेस अलग अलग प्लेसेस में होता है. इंडिया करती है, कभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी करती है, तो अलग अलग प्लेसेस इंडिया कंडक्ट करेगी मिलिट्री एक्सरसाइज, तो कहाँ करेगी? तो किसी प्लेस पे ही करेगी ना. अरे मैडम, इन्फॉर्म करना है उन्हें कि हम करने जा रहे हैं. पाकिस्तान भी करेगी तो हमें भी इन्फॉर्म करेगी, क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छा नहीं है. इससे इन्फॉर्मेशन ये होगा कि हम आप पे अटैक नहीं करने जा रहे. मान लीजिए कि हमने कश्मीर में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज की और हमने इन्फॉर्म नहीं किया, और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन चलेगी कि मिलिट्री डिप्लॉय हो रही है, मिलिट्री कुछ बाहर से मिलिट्री आए हैं वो कर रहे हैं, तो दे कैन टेक इट एज एन कि दिस इज दे मे बी प्लानिंग एन अटैक ऑन अस. तो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच ऑफ द बोथ कंट्रीज और 3 कंट्रीज कि उनके क्या मिलिट्री एक्सरसाइज है, हमारे कैसे ट्रेनिंग करते हैं, वो सब वी आर एक्सरसाइज. तो उसमें क्या इश्यू है बताने में? ठीक है, नेक्स्ट. In 1992, a joint declaration was signed. In 1992, a joint declaration was signed related to prohibiting the use of chemical weapon against each other. Prohibition of use of chemical weapons. Prohibition of the use of chemical weapons against each other. ठीक है, chemical weapons हम यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? बोलिए. chemical weapons, ऑरेंज एजेंट याद है आपको? वी हैव डन व्हेन अमेरिका यूज एन ऑरेंज एजेंट अगेंस्ट द वियतनाम. उसमें केमिकल एक बॉम्ब में डाल करके, और दैट केमिकल इज बीन स्प्रेड, और हाँ इस टाइप का, दैट हैम्पर्स द लार्जेस्ट, कि वो एयर में बनी रहेगी. हाँ, और उसमें एयर में बनी रहेगी तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी वॉर के बाद भी. तो दैट इज केमिकल एनी, हाँ मतलब दो हार्मफुल केमिकल विच कैन डैमेज मोर. आपने बॉम्ब मारा तो एक एरिया में इंस्टेंट ही डैमेज किया, यस और नो, बट केमिकल वेपन यूज किया तो दैट कैन बी get mangled with water,
dissolve in water also, air also, right? जैसे आपका भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुई थी, पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना? तो दैट काइंड ऑफ केमिकल के अब यूज करें तो दैट विल बी फॉर लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम एंड दैट कैन हैम्पर्स द populations, major population in larger time. समझ रहे हैं? yes or no? so this is chemical weapon कि वो यूज नहीं कर सकते. वायरस नहीं है, दैट इज वायरस इज बायोलॉजिकल. केमिकल रिलेटेड टू आपने ऐसा कोई केमिकल मिक्सचर बना लिया केमिकल का और उसको स्प्रेड कर दिया, हार्मफुल केमिकल्स. नहीं, आपने वाटर में एयर में आपने उसको थ्रू बॉम्ब यू जस्ट प्लांटेड, व्हेन इट एक्सप्लोड इट गेट मिक्स विद द वाटर और एयर. तो कुछ ऐसे हार्ड केमिकल जो एयर में ज़्यादा समय तक रहते हैं. यस और नो? राइट. जैसे आपने कभी भी यू हैव यूज्ड मेनी टाइम्स हिट, काला हिट, लाल हिट, केमिकल होता है उसमें. जब आप उसको स्प्रेड करते हो एकदम बंद कमरे में तो दैट अफेक्ट द ब्रीदिंग सिस्टम्स. चला जाए तो कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी स्मेल लॉन्गर पीरियड के लिए रूम में रहती है. आपने यूज किया है ना? तो दैट इज काइंड ऑफ केमिकल. अब काला हिट नहीं यूज कर रहे हैं, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ केमिकल, यूजिंग ऑफ केमिकल. तो फॉर with a dangerous characteristic of chemical can be used like this. through bomb के bomb मार दिए, chemical use हो गई, that can be sprayed and that can be last for larger period. Is it clear? Next. Then in May 1999 the Kargil conflict breaks out between the two nations. In May 1999 a Kargil conflict breaks out between the two nations, which eroded the relation between India and Pakistan. With Kargil conflict happens, और आप लिख सकते हैं breaks out between the two nations. breaks out, Kargil conflict in May 1999 breaks out between the two nations which eroded the diplomatic relations. erode का मतलब समझते हैं ना? खराब. erosion आपने पढ़ा, soil erosion पढ़ा होगा, राइट? तो eroded means it damage और ये कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जी. यस यस यस, कारगिल. इट्स यही तो, वही तो अभी आपको मैंने बताया ना कि अगर दिस दे हैव अटैक्ड इन सियाचिन या कारगिल टू कैप्चर, so this is in place here. This is LAC, line of actual control, अक्साई चीन का एरिया, right? And this is LOC. तो LOC कैसे बन रही है? ओके, इंडिया. और कारगिल यहाँ पर है जहाँ अटैक हुई थी 1999 में. ठीक है, ये तो इसलिए तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशंस ऐसा ही चल रहा है, डायलॉग डिसरप्शन डायलॉग. इंडिया ने कभी अटैक नहीं किया है, द पाकिस्तान हैज अटैक्ड. नेक्स्ट. कौन सा एग्रीमेंट ब्रीच हो गया? लेकिन एग्रीमेंट तो नहीं था कारगिल एग्रीमेंट. हाउ? यू आर मिंगलिंग, एक्चुअली यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. आप जब भी कोई काम करेंगे आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक? राइट, दिस इज सेपरेट थिंग. बट आपने हमला कर दिया तो दैट डज नॉट मीन कि मिलिट्री एक्सरसाइज इफेक्ट होगा. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो?
तो हाउ इट विल ब्रीच कि अब आपको हम बताएंगे नहीं कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने अटैक इसलिए नहीं किया या अटैक का कारण ये नहीं बताया कि मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से हमने अटैक किया। This period during 98-99 there was a military coup in Pakistan. Parvez Musharraf, a military army chief, came into the power and he tried to capture the glacier Siachen Kargil. So he sent a military. जाओ मेरे लिए करके लेके आओ और यू विल बी इन बेटर पोजिशन। आप वो यहाँ स्टेशन थे, इंडियंस यहाँ थे। they are at the height, Pakistanis and Indians at the low. यहाँ से चढ़कर इन्होंने वॉर किया है। That is not because that if they have given a reason, a war is not only of that, they are prone to attack in Kashmir. में एक ही dispute है इंडिया और पाकिस्तान, that is Kashmir. Now the dispute has came to be known as a Pak occupied Kashmir after abrogation of 370. अब डिस्प्यूट इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर नहीं है, अब डिस्प्यूट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर after 370 was abrogated, and this was a clearly mentioned statement by an Indian authority. After abrogating 370 they have mentioned that the dispute between India and Pakistan was not a Kashmir, or it is not a Kashmir, it is, now we will discuss on a Pak occupied Kashmir, because Kashmir is an integral part of India and they have merged through abrogating 370. Getting the point? तो अब डिस्प्यूट सिर्फ पीओके को लेकर के है, कश्मीर को लेकर नहीं है। ठीक है, चलिए। So attack was 1999 between these two countries and the relation is eroded. ठीक है, उसके बाद कुछ थोड़ी मोड़ी चीजें होती हैं। Then we move to 2008 where attack in Mumbai. In 2008 an attack in Mumbai 26/11 लिख लिया आपने? लिख लीजिए लाइन, that will in 2008 Taj Hotel Taj attack 26/11 2008 हाँ 26/11 पाकिस्तानी और कौन? अजमल कसाब सब लीड कर रहे थे, पकड़ा वो गया है, बाकियों को मार दिया इन्होंने ताकि हमें वी प्रूव दैट पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड। अगर मार देते तो प्रूफ नहीं होता, हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एलिगेशंस नहीं कर पाते। पाकिस्तान को डिनाइड, कहाँ है प्रूफ? प्रूफ दीजिए। तो फॉर दैट ही वाज केप्ट अलाइव। Mumbai attack was Mumbai, Uri was a failure of intelligence. Okay. Then in 2016, attack in Uri. In 2016, उरी आपका यूपी कह रहा हूँ, कश्मीर में ही है उरी। हाँ, कहाँ उरी बताइए? अरे तो कश्मीर नहीं गए हैं आप? जम्मू होकर कश्मीर नहीं घूमने? ओरिजिन अब डिस्ट्रिक्ट कौन सी मुझे नहीं याद है, लेकिन कश्मीर में है उरी। In 2016, Uri, the terrorist attack on Indian Army base in Uri. Full stop. Sorry.
full stop. 11 day later, 11 day later, Indian Army, 11 day later, 18 दिन अटैक, 11 दिन अटैक के बाद इंडियन आर्मी हैज कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक, inverted comma surgical strike to destroy the terror launch pad across LOC. Destroy the terror launch pad across LOC. Terror launch pad. हाँ, what reading launch pad इसलिए कहा कि वहीं से launch होते थे. They get trained and they come there and they were sneak from that area. Terror launch pad along LOC. Across LOC ना. तो अटैक सडन, मुंबई भी सडन अटैक था, बताकर थोड़ी अटैक करेंगे. हाँ, ठीक है. So these are the incidents which shows how the dialogues goes. पूरी ऊपर ही है कश्मीर में. बोलिए, where is map? कश्मीर खोलिए, where is map? आप लोग एटलस क्यों नहीं लाते हैं? Where is atlas? इसलिए मैप बोलता हूँ, मैप खोल के रखिए. तो देखे उरी 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 नहीं, मैप में. अच्छा, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट दिख गया ना? सॉरी, हाँ, गुलमर्ग के पास है उरी. ठीक है, चलिए. तो आपने भेज दिया लेने. बारामूला डिस्ट्रिक्ट. थोड़ा फास्ट चलिए. Now we will write down the key issues between India and Pakistan. Now write down the heading key issues between India and Pakistan. ठीक है, देख लीजिए. Key issue between India and Pakistan. सबसे पहला तो टेररिस्ट. भाई की इशू दोनों. इंडिया ऑलवेज क्लेमिंग दैट पाकिस्तान इज बिन sending terrorists to, and they are training the terrorists in LOC areas to attack on India. अब जितने भी हैं सब टेररिस्ट अटैक आप देख. कौन? हाँ, यहाँ पे नजदीक कर रहे हैं. ठीक है. So write down. The first is terrorism. The first key issues between the two is terrorism. Write down the point under this. India has been pressing its concern. India has been pressing its concern on the role of Pakistan-based actors terrorism in India. Pakistan-based actors. Actor मतलब वो फिल्मी एक्टर नहीं, non-state, those who are conducting that attack. हाँ, Pakistan-based actors in terrorism in India. Full stop. Terrorism emanating from Pakistan. Next line या full stop. Under terrorism. Terrorism emanating from Pakistan emanating from Pakistan and EMANATING. Emanating means
ओरिजिनिंग, ओरिजिनेट करना, वहाँ इमिट करना, टेररिज्म फ्रॉम emanating from Pakistan and the territory under its control, Pakistan and territory under its control, territory under its control has severely disrupted the initiative to build a stable relationship. Severely disrupted initiatives to build a stable relationship. So this is first issues, the Pakistan relation, right? Second, Kashmir. इसको लिख लेते हैं, how it has become point of contention. Following the Indo-Pak War in 1947, following an Indo-Pakistan War 1947 and a ceasefire in 1949, which divide the Jammu and Kashmir parts one part under the Indian administration is a part of Indian territory, one part is a part of Indian territory, and the other part is under the not administration, Indian territory, and the other is Pakistan occupied Kashmir. उन्होंने occupied किया है हमारा कश्मीर, so that should be Pakistan occupied Kashmir. History you will learn about the Direct Action Day Plan 1940. Action Day Plan. Modern, that is continuing. Next point is normalization. A Kashmir issue we all knows, ठीक है ना? कैसे start हुआ, just have written. Next is normalization. Next point, next is normalization. It refers to the process of making progress. It refers to the process of making progress on the contentious 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 issues between the country. Right? Full stop. It involves trade, culture, exchange, and resolving the issues like Siachen and Sargrik issues. Siachen और सरग्रिक, यानी सरग्रिक अलग एरिया है, उसका अलग डिस्प्यूट है. ग्रीक गुजरात वाला इलाका है सरग्रिक, वो हम करेंगे उसको सेपरेटली. क्या हो गया, यानी कंफ्यूजन? SIR सर CREEK, that is this. Why Greek name? Because the Greek Sir Greek was
स्टैब्लिश और डिमार्केटेड द एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो जो गुजरात वाला कोस्ट लाइन से जो एरिया क्रॉस होता है ना, राइट, दैट इज कम अंडर द सरक्रिक। हाँ हाँ, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, CREEK, क्रीक, सर क्रीक। नेक्स्ट इशू इज इंडस वाटर ट्रीटी। ये थोड़ा सा बड़ा है, समझना भी है और लिखना भी। हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, देखिए ये है, दिस इज द सर क्रीक डिस्प्यूट। ये पार्ट जो है गुजरात का, दैट इज, तो हम करेंगे। दिस इज इंडस। So there are dispute between the distributions and controlling of 5 river seas: Indus, Jhelum, Chenab, Beas and Satluj. सतलज आपने कौन सा बोला? अच्छा, मुझे सरयू या कुछ ऐसा सुनाई दे। सतलज, ये 5 नदियों का ये है, ठीक है। तो एक 3 नदियां जो वेस्ट फ्लोइंग है एंड ईस्ट के बीच का डिवाइड है। सो नाउ यू राइट, यहाँ समझते भी चलेंगे और उसे देखते भी चलेंगे। तो राइट डाउन, Indus Water Treaty signed between India and Pakistan in 1960 with the help of World Bank. 1 2 3 4 5 6 वर्ल्ड बैंक मीन्स वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन से और विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इनमें जो 6 नदियां हैं, देखिए, द फर्स्ट इज इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। तो आप देखिए, तो रावी, सतलज, ब्यास इज ओरिजिनेटिंग इन हिमाचल प्रदेश, ओरिजिनेटिंग इसका हिमाचल प्रदेश में। इंडस ओरिजिनेटिंग कहां पर? लेक मानसरोवर, जहां पर आपका दिस वन ब्रह्मपुत्र इज आल्सो ओरिजिनेटिंग व्हिच फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। एंड इंडस ओरिजिनेटिंग इन द दिस लेक मानसरोवर, इट फ्लोज इनटू द वेस्टर्न पार्ट। तो ये कहां, यहां से घुसती है, कश्मीर से घुसते हुए इट ड्रेन्स इनटू द पाकिस्तान, right? Then Jhelum originating in Kashmir, Chenab, Beas, Ravi, Satluj, they are originating in. Now the Satluj is also originating from here. तो 3 नदियां जो है वो कहां, 4 नदियां कहां ओरिजिनेट हो रही है? इंडिया में, झेलम, चेनाब, रावी एंड ब्यास। 2 river, that is Satluj and Indus, originating in तिब्बत, मानसरोवर के पास। 3 रिवर चैनल है जो मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, जो इंडिया को ड्रेन करती है। ब्रह्मपुत्र फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और 2 सतलज और इंडस, दैट और वेस्ट फ्लोइंग है, और जो आकर के इंडिया को करते हुए पाकिस्तान में ड्रेन करती है। सो सतलज एंटर इन हिमाचल प्रदेश, यहां से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। देन कैचमेंट एरिया इस हिमाचल एंड पंजाब। देन फ्रॉम हियर ब्यास के साथ मिलकर के ये सतलज पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द शेयरिंग ऑफ वाटर एंड होल्डिंग कैपेसिटी और यूजिंग ऑफ वाटर ऑफ दीज 6 रिवर इज बीन agreed by the 2 nation India and Pakistan in the form of Indus Water Treaty। तो इंडस वाटर ट्रीटी में सारी चलिए, क्योंकि ये फाइनली सब जाकर के इंडस में ही मिल रही है। इंडस यहाँ आया, ठीक। अब देखिए, रावी मिल गई सतलज में और वो जाकर के इंडस में मिल गई। देन ब्यास इज आल्सो मर्ज इनटू द सतलज,
राबी और चेनाब और झेलम एक साथ मिल गए यहाँ पर, झेलम आकर चेलम में मिली, चेनाब में, और चेनाब और राबी का मिक्सचर आकर के झेलम एंड चेनाब का मिक्सचर come into the Rabi and then merge into the Satluj, और फिर it comes into the Indus. समझ रहे हैं? तो all these are the tributaries, आप कह सकते हैं tributaries of Indus also. Indus की tributaries Satluj, and all are eastern tributaries. आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं ना, राइट? तो द ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हो गई ये. So the agreement of Indus water is between the Indus and its tributary. That's why it is known as the Indus Water Treaty in 1960, signed between India and Pakistan with the help of World Bank. Yeah. Now write down. The treaty pertained to most complicated and satisfactory utilization of the treaty. Next point, the treaty pertained to most complete and satisfactory utilization of most complete and satisfactory utilization of waters of the Indus system. Utilization of waters of the Indus system. The treaty pertains to the most complete and satisfactory utilizations of the Indus Water Treaty or Indus water of Indus system, comprising 6 rivers across Indian Indus basin. हाँ, इंडस बेसिन, बेसिन में आना ना, दैट इज बेसिन, समझते हैं ना? नहीं, बेसिन आपके घर में बेसिन है ना? बेसिन, वॉश बेसिन, जहां पर सब आकर के इकट्ठे मिल रहे हैं, दैट इज बेस. अच्छा, हाँ, सॉरी. राइट डाउन ऑल द 6 नेम ऑफ दिस इंडस बेसिन. इंडस, झेलम, ब्यास, चेनाब, सतलज, रावी. नदियों के नाम लिख लीजिए 6 बेसिन में. क्लियर? नाम लिख लिया आपने 6 का. नाउ राइट डाउन द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस of Indus Water Treaty. Important provisions of Indus Water Treaty. First point, the 3 western river provisions of the treaty. तो 3 वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन से? इंदस, झेलम, चेनाब. इंदस, झेलम एंड चेनाब, right, were made available to Pakistan for unrestricted use. So 3 western rivers, that is Jhelum, Chenab and Indus, were made available to Pakistan for unrestricted use. ठीक है? अब इसी को एलोबरेट करते हैं, इस पॉइंट को ही. हाँ बोलिए. हो रही है, लेकिन दैट काइंड ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रिवर ना. आपका जो ये झेलम है, दैट इज वेरी लिटिल बिन यूटिलाइज इन इंडिया, क्रॉस वहाँ चला जाता है, और ये भी आपका वैसा ही हो रहा है, तो इसलिए वहाँ ये कहा गया. ठीक है. नाउ वी विल राइट रिलेटेड टू द फर्स्ट, व्हाट आपने जो वेस्टर्न
रिवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा ना, उसमें और क्या क्या प्रोविजन है पाकिस्तान के पास, राइट? राइट अंडर दिस सब पॉइंट अंडर दिस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी आर राइटिंग इंपॉर्टेंट प्रोविजन. So first we have written the first point that Western River, Jhelum, Chenab and Indus was given to Chenab and Indus given to Pakistan for unrestricted utilization. तो क्या क्या उस पर कर सकता है और इंडिया का क्या रेस्ट्रिक्शन है? राइट डाउन दिस. So first, under this treaty, India shall not permit any interference under this treaty, India shall not permit any interference with these waters except for the except for the first domestic use, means India is allowed to use domestically, domestic use के लिए allow है. Second, non consumptive use, CONSUMPTIVE, नॉन कंजप्टिव पीने वाला पानी का कंजप्शन है, एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी ड्रैम और एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर यूज, नहीं ये दीज आर द एक्सेप्शन. हाँ, फॉर एग्रीकल्चर नॉन कंजप्टिव यूज यू कैन use consumptive use, that is drinking water and all this. So this is allowed. Next point, India shall not store any water. India shall not store any water or construct any storage work on the Western River, or construct any storage work on the Western River. ठीक है, means that India can use the Western River which has been allowed to this. Is it clear? It is India also allowed to generate hydroelectricity from the Western River, लेकिन स्टोरेज नहीं बना सकता, रिजर्वायर नहीं बना सकता. नहीं, इस वेस्टर्न रिवर पे स्टोरेज के पानी को उसको इकट्ठा कर लिया, उससे क्या होगा? फ्लो कम हो जाएगी. हाँ, लेकिन बना रहा है उसका आईसीजी में, वो लिखेंगे लास्ट में, करंट डेवलपर. चाइना के थ्रू बना रहा है, इंडिया ने भी बनाया है, इंडिया भी डैम यहाँ बना, किशन गंगा डैम जिसका अपोज हुआ है. ठीक है, चलिए लिखिए. ठीक है, सो नेक्स्ट, इंडिया इज परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटी. इंडिया इज permitted to construct hydroelectric power facilities on these river subject to constrained. Hydroelectric power facilities on these river subject to constraint specified in the treaty. On these rivers, comma, subject to constraint. Constraint means restriction mentioned in the treaty. तो treaty में जो mentions है restraint और construction, उसको करते हुए that can be used, right? This is west flowing river. ठीक है. Next, second is
the eastern rivers, that is Ravi, Byas, Satluj. Ravi, Byas, Satluj. हाँ, सेकंड, फर्स्ट आपने लिखा 3 वेस्टर्न रिवर्स, उसमें आपने एलोबरेट किया, राइट. सिमिलरली 3 ईस्टर्न रिवर्स, Ravi, Byas, Satluj, were made available to India for unrestricted use. Three eastern river, Ravi, Byas, Satluj, were made available to India for unrestricted use. Clear? अब इनमें वो कुछ भी कर सकता है, रिजर्वायर बना ले, कंट्रोल कर ले पानी, दैट इज गिवन टू इंडिया. ठीक है. और पाकिस्तान इससे रिलेटेड देयर इज नो पॉइंट एज वी हैव एक्सप्लेन द फर्स्ट वेस्टर्न राइट, दैट इज नॉट हैम्परिंग इंडिया. तो कर तो रहा है. तो आपने लिखा तो इंदस, झेलम, चेनाब, वेस्टर्न रिवर गिवन टू पाकिस्तान. 3 ईस्टर्न रिवर, रावी, ब्यास, सतलज, इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज 80%. 20 मतलब वो 3 नदियों का वेस्टर्न रिवर का 80% पाकिस्तान यूज कर रहा है. 20% डोमेस्टिकेशन के लिए, ये सब कंजप्शन के लिए इंडिया यूज करेगा. एग्रीकल्चर, अब यहाँ से एग्रीकल्चर तो होनी चाहिए ना. यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट. Any doubt? Right? So these are the provisions of the treaty. Now write the point related to treaty, that the treaty set out a mechanism. The treaty set out the mechanism for cooperations and set out a mechanism for cooperation and information exchange between operations and information exchange between 2 countries regarding the use of rivers, regarding their use of rivers, known as Permanent Indus Commission. Permanent Indus Commission. तो एक कमीशन बनेगी, राइट, विच इज परमानेंट इंडस कमीशन. अब इनका काम क्या होगा? इंफॉर्मेशन और कॉपरेशन एक्सचेंज करना विच रिलेटेड टू द यूज ऑफ इंडस ट्रीटी, राइट. तो इन दिस क्या होगा? विच हैज, तो इट विल हैव अ कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री. Indus, the permanent Indus Commission लिखे हैं आप, so the member will be from both the country because it is between the both 2 country, and the members will known as a commissioner. ठीक है, चलिए. Now write down the recent disagreement between the 2 nations. Recent disagreement मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों अभी डिस्प्यूट्स है. हाँ, इंडस से ही रिलेटेड. रिजॉल्व हुई कहाँ है? ये ट्रीटी तो बन गई है, बट कुछ भी बनाए. अनरेस्ट्रिक्टेड यूज लिखा है आपने. देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शंस. किशन गंगा डैम हम बना रहे हैं, अभी आप लिखेंगे डिस्प्यूट्स है, और हमें अलाउड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिलेटेड चीजें कंस्ट्रक्ट करने का. यस और नो? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट विच रिक्वायर्स एन वाटर. लिखिए. So we are writing recent disagreement. What is the point of disagreement between India and Pakistan related to Indus water? हाँ, वाटर कैपेसिटी इंडस का सबसे ज्यादा है.
अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो इंडस वाज द लार्जेस्ट, वुड बी द लार्जेस्ट रिवर। अभी है ना गंगा, गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। क्या? ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज बहुत कम है ना, अरुणाचल असम घुसते हुए निकल जाती है। गंगा पूरा 4 या 5 स्टेट क्रॉस करते हुए जाती है ना, उत्तराखंड घुसेगी, राइट, बिहार, यूपी, बंगाल, राइट, ऑल ड्रेनेज। फिर वो राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड पाकिस्तान डिसएग्री अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ किशन गंगा। पाकिस्तान उसको मना कर रहा है, इंडिया मना रहा है, दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गई ना। डिसएग्री अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ किशन गंगा, ब्रैकेट में कैपेसिटी लिखिए 330 मेगावाट कैपेसिटी, अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ किशन गंगा एंड किशन गंगा कैपेसिटी 330 मेगावाट्स। किशन गंगा, हाँ आप क्या सुन रहे थे? किशन गंगा ही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ किशन बोलिए, कृष्ण बोलिए, है वही, कोई किशन बोलता है, कोई कृष्ण गंगा, इट्स द सेम थिंग। KISHENGANGA, गंगा, किशन गंगा, it's of capacity of 330 megawatts, and rattle of 850 megawatts, hydroelectric power plants built by India. Rattle, RATLE, rattle, it's also a rattle like a Kishan Ganga, rattle, bracket में that capacity of rattle will be 850 megawatt, hydroelectric power plant built by India. रैटल भी नाम है, जैसे किशन गंगा नाम है ना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर किशन गंगा, ऐसे रैटल किशन गंगा, ये भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो इंडिया बना रही है। गेटिंग माय पॉइंट? अनदर, ये दो अलग हैं, और इंडिया को अलाउ है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, so they are constructing. पाकिस्तान इज ऑब्जेक्टिंग। आपके पास मैप है ना, इन द मैप यू विल हैव अ सेक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया, लाइए दिखाइए, आई विल शो यू, इसलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज कम अप विद द मैप। यस एटलस, दैट इज नेसेसरी चाहिए। चल मिल जाएगा इसमें। So this is the first disagreement between the two related to construction of Rattle hydroelectric power and Kishan Ganga. Next point.
water capacity. Next point, the two countries disagree over whether the technical design. The next point, the two countries disagree over WHETHER whether the technical design feature of the two hydroelectric plant design features of the two hydroelectric plants contravenes the treaty. Contravene means that contradict karna. Next point, contravene the treaty, Indus Water Treaty. उल्लंघन हो, treaty का उल्लंघन ना हो, right? That is next point. The plants are on respectively a tributary of the plants, that is hydroelectric plants. What we are writing about, Kisanganga and Rattle plant. So the plants are on respectively a tributary of Jhelum and Chenab river. Plants are on respectively a tributary of Jhelum and Chenab river. ठीक है, तो चेनाब और झेलम के ट्रिब्यूटरीज पर ये दोनों बन रही हैं, रैटल और किशनगंगा. चेनाब एंड झेलम. ट्रिब्यूटरीज, चेनाब की जो ट्रिब्यूटरीज है उसी के ऊपर, चेनाब और झेलम के ऊपर ये दोनों प्लांट बन रही हैं, रैटल झेलम. तो उनके उस पे ट्रिब्यूटरीज पे, ट्रिब्यूटरी समझते हैं ना, हाँ, जो ज्वाइनिंग द मेन रिवर. नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रीटी designated these two rivers means Chenab and Jhelum. हाँ, the treaty designated these two rivers, Chenab and Jhelum, along with Indus as a part of Western River to Pakistan. Western River allocated to Pakistan. ठीक है, this is recent disagreement. Now write down next point. India concern designated dedicated. हाँ, designated means that is dedicated to them, उसको दिया हुआ है. The Indus under the treaty, Western River, Indus, Jhelum, Chenab was given to whom? Pakistan. That is desert. So write down India's concern. अब इंडिया का कंसर्न क्या है रिलेटेड टू द ट्रीटी इन रिसेंट टाइम. नेक्स्ट पॉइंट, अंडर दिस रिसेंट, ये जो हमने ऐसा रिवर का वाटर उनको अनरेस्ट्रिक्टेड यू में यूज करने दिया थ्रू द ट्रीटी, कि हम इसका यूज ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज totally depend the rivers which flows in the Pakistan that has an originated and passes through India, right? तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखते हुए जैसा फेजेस चल रहा है, डिसरप्शन डायलॉग का, इसलिए एक ट्रीटी रखी गई ताकि इन फेज इन द टाइम्स व्हेन देयर इज नॉट अ गुड रिलेशन, सो द वाटर शुड नॉट बी कट ऑफ. ये वाटर काट दिया था पाकिस्तान को,
सूखा मार रहे हैं. Are you getting my point? So that's why this treaty was been signed by World Bank through the with the interventions of World Bank. At least at the time of war also, this treaty should not be disrespect. India should not cut off the water supply to the rivers to Pakistan. This right? तो इन 3 रिवर्स का फ्लोज जो पाकिस्तान में एंटर हो रहा है दैट हैज बीन गिवन अनरिस्ट्रिक्टेड. इंडिया हैज बीन गिवन ए लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन. उसके साथ वो कुछ भी करे, इंडिया इस पे इसको कट नहीं कर सकती, तो डैम यहां नहीं बना सकती. आर गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन चेनाब और झेलम के जो आपका ट्रिब्यूटरीज है रिवर्स, लोअर झेलम पे is constructing 2 dams which has been allowed. डैम भी बना रही है, वाटर प्रोजेक्ट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड रैटल. So the concern the Pakistan saying that they can restrict the control the flow of river. डैम बना दिया आपने तो रिवर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं आप? रिसेंट एग्जांपल दिल्ली, हरियाणा के डैम से पानी रिलीज की गई एंड ड्यू टू विच द दिल्ली वाज सबमर्ज. So controlling a water through dam. This is a concern of Pakistan. Hathni Kund Dam. अब वो that has been given. ठीक है? Now write down the India's concern. So the basic dissatisfaction with the treaty arises, the basic dissatisfactions with the treaties arises from the fact that treaty prevents India from building any storage system on the Western River. Right? और जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए परमिशन है भी, that is also been opposed by the Pakistan due to the political changes, political rivalry. Right? है आपने ना, you have written under the treaty that the western flows river, 3 rivers which go into Pakistan, that is will unrestricted or India will not construct any storage facility, though it is allowed to construct an hydroelectric plant. बनाने का allow है. अब open the treaty. हाँ हाँ, स्टोरेज नहीं कर सकती, नहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना सकती है, बट दैट इज ऑल्सो बीन अपोज्ड बाय पाकिस्तान ड्यू टू पॉलिटिकल राइवलरी. पॉलिटिकली दुश्मनी है, एनिमी. तो उतना अलाउड है, उसके लिए अलाउड है सम स्टोरेज. गेटिंग द पॉइंट कि आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट, India has been attempting to construct run of the rivers project. India has been attempting to construct run of the river project on Western River. Run of the river projects on Western rivers. रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मीन्स हाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो अलाउड है दैट इज ऑफ ए रन ऑफ द रिवर. एक तो स्टोरेज करिए, देन यू रिलीज वाटर, आपने डैम बना ली,
then you release the water. That is storage. You can construct an electricity but on the run of the river. रोकना नहीं है पानी को, आपको उसी पानी को यूज करते हुए बना. But this project is also been objected by the Pakistan, though it is allowed in the treaty. So this is the main concern of India. So you have written Western River, right? Full stop. Run of the river projects are permitted by the in this treaty. Run of the river projects are permitted by the treaty. Run of the river projects are permitted by the treaty. But Pakistan wants that India should not do any work on Western River. And seek, SEEKS, seeks international intercession, INTERCESSION, international intercession by invoking the treaties, dispute settlement provision. ठीक है, though it is allowed but they are disrupting कि नहीं कर सकते. और international suggestions, I mean interventions have been taken. Next point. कि वो इंडिया ट्रीटी का, इंडिया इज वायलेटिंग द एग्रीमेंट ट्रीटी, बट अंडर द ट्रीटी इट इज अलाउड. So, but they do not want to adhere. They want that India should not use or do any work on the Western. Complete control of Western. Right? Next point. Since the treaty's conception in 1960, the two countries have been in conflict. Since the treaty's conception in 1960, the two countries have been in conflict over a number of projects like Baglihal project, Baglihal hydroelectric plant. Yes, BAGLIHAR, 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 Baglihar hydroelectric project, Kisan Ganga hydroelectric project, Rattle Ganga project on Chenab River, Baglihar, Kisan Ganga, Rattle hydroelectric plant over Chenab, which has been constructed by or proposed by India on the west flowing river. Proposed by India, the western. Yeah. So this is an India's concern related to Indus Water Treaty. Now write down recent development in Indus Water Treaty 1960. So Permanent Court of Arbitration, PCA in Hague,
permanent court of arbitration, PA in Hague, HAGUE. Hague is in arbitration. Hague is in Netherlands. So permanent court of arbitration, Hague, HAGUE. Hague is a place, Netherlands. Sorry, no, I've just said the Hague is in Netherlands, right? So now hyphen, give a hyphen. Now what the judgment has been given by this court related to Indus Water Treaty. In an unanimous decision which is binding on the parties, in an unanimous decision, UNANIMOUS, unanimous decision which is binding on the parties and without appeal, parties, binding on parties, in an unanimous, UNANIMOUS, unanimous decision which is binding on the parties and without appeal, the court rejected each of the objectives. The court rejected each of the objectives raised by India and determined that the court is competent to consider and determine that, sorry, क्या लिखा आपने, that the court is competent to consider and determine the disputes put forward by Pakistan for arbitrations. Okay, put forward by Pakistan for arbitrations. ठीक है, and so India has rejected this or opposed this judgment. It says कि इंडिया ने जितने भी ऑब्जेक्शन रेज किए हैं that is not acceptable. The Pakistan has gone for the arbitration, so it has been accepted. Now there should be arbitrations on the Indus Water Treaty, but India has opposed because treaty itself says that India can build, but that has been opposed. अभी आपने लिखा ना रैटल, पगली हाल, अब आर्बिट्रेशन होगी, बात चलेगी, हो चुका, फैसला आ गया, पता नहीं अब ये मैं कैसे बताऊं, बात वो नहीं है, बात ये है कि इंडिया ने अपोज किया कि पाकिस्तान कैन नॉट रेज any issue because it has been written treaty. So it says the raise determine that court is competent to consider. मतलब ICJ PCA is competent. Actually India has objected that Pakistan and cannot take the Indus Water Treaty to PCA because PCA is not a competent authority to discuss this. So it is competent. So now the treaty will be come under the arbitration. समझ रहे हैं या नहीं? आप अभी भी पढ़ रहे, यही तो बता रहा हूं. पाकिस्तान ट्रीटी को लेकर के पीसीए के पास गई. इंडिया ने क्या कहा कि पीसीए अथॉरिटी नहीं है इस डिसीजन को या इस ट्रीटी को, एग्रीमेंट को डिसाइड करने वाला.
तो पीसीए ने क्या कहा, it is competent to decide this case, so now it will be decided by PC, and India is again opposing. Now do you get the point? Both, but they have said that we are competent to hear the arbitration. Now we will hear the arbitration. Is this clear now? फिर क्या confusion है? वो ठीक है, that's a different thing. Is it clear? अभी तो आया जो this year 20th, अभी तो आया रिपोर्ट में. This is recent development 23. Is this clear? So this is Indus Water Treaty. Any doubt? ठीक है? Any issue? Now we will see the Sargrik dispute. यहाँ थोड़ा सा इजी दिख, चलिए. So now Sargrik. So this Sargrik is basically area between the Gujarat of India. It is an border between India and Pakistan. ठीक है? So border between India's Gujarat state and Sindh province of Pakistan. तो ये आपका सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, और दिस इज अ गुजरात. नाउ दिस लाइन, दैट इज अ ब्लू लाइन, dotted line, is a demarcated or accepted boundary between this. Dispute is between this. Green line जो आप देख रहे हैं ना, this is a reason for dispute. This the Sargrik line. एरिया का वो है आपका. दिस इज रिलेटेड टू, यस, दिस इज इंडिया ईस्टर्न बैंक एंड दिस इज वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर. ये जो अरेबियन सी है, दैट इज अ गैप ना. यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों, व्हेन यू विल सी, रुके, इंडिया पाकिस्तान का मैप होपफुली हमें, दिस इज द एरिया. Sargrik, यहाँ देखिए, Sindh province, this is Gujarat and this is that area. तो यहाँ जो प्लैंकटन है, फिशिंग एरिया are getting, and it's a that reef, coral reef area, the coral reef area, that dispute related to that. ठीक, and this is boundary has been demarcated by the creek, Sar Creek. That's what is so known as a Sar Creek. ठीक है. So this is green line, which is known as Sar Creek. This already, the blue line has already been a demarcated pier है, that is land boundary. ठीक है, between Sindh and Gujarat. But ये आपका जो है ना, that is an connecting land water, connecting land water. Arabian Sea का जो passage है, और it is also known as an
इज अ प्लेस ऑफ रीफ, कोरल रीफ, कोरल रीफ का इलाका है ये. India's coral reef is in this areas. ठीक है. So this is a disputes, and this has all been done. Now आप do you know this Gulf of Khambhat? Gulf of Khambhat कहाँ पर है वो? गुजरात में. Kutch, sorry, Gulf of Kutch. This is Gulf of Kutch. This is a खोरी creek. तो इसी के ऊपर this है disputes. Yes or no? क्या आप देख रहे हैं ना वेस्टर्न बैंक एंड. चलिए राइट डाउन. Another disputes between India and Pakistan. आती है ना ये वाला पोर्शन, तो हम इसकी बात कर रहे हैं. छोटा सा ऐसा है ना, सिंध के साथ जो टका हुआ है. बाउंड्री से रिलेटेड अनइवन बाउंड्री डिस्प्यूट. अनइवन नहीं, क्लेमिंग पार्ट ऑफ द इंडिया ये हमारा है. सिंध सिंध सिंध. देखिए द 96 किलोमीटर सर क्रिक डिस्प्यूट्स. सर क्रिक डिस्प्यूट्स. द 96 किलोमीटर estuary, estuary, estuary. What is estuary? लैंड और दोनों के बीच में, सॉरी हाँ, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. cutting through the Gujarat state in India and Sindh province. Gujarat state and Sindh province. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट in the India-Pakistan composite dialogue. Subject in the India-Pakistan composite dialogue that resumed under Vajpayee's government, Atal Bihari Vajpayee's government in 2004. Composite dialogue that resumed अंडर, ऐसे एक एक वर्ड लिखेंगे. अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट रिज्यूम अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट 2004. नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज कंपोजिट डायलॉग? हाँ, with both has come into the dialogue. Next, 6 round of talks taken place and the two sides have conducted 6 rounds of talks taken place and the two sides have conducted a joint survey of the creek. Talk have been taken place and two sides, means both India and Pakistan, has conducted a joint survey of the creek. इस creek का दोनों ने साथ सर्वे किया. An exchange map showing their respective positions. And exchange the map showing their respective positions.
the issue remain unresolved. ठीक है. Now write down India's claim versus Pakistan claim. अब दोनों जो यहाँ क्लेम कर रहे हैं, व्हाट इज दिस क्लेम? ठीक है, इंडियाज क्लेम एंड पाकिस्तान क्लेम. फर्स्ट पॉइंट, write on the first point that paragraph 10 paragraph 10 10 number 10 of 1914 verdict of Bombay government verdict of Bombay government states that verdict verdict of Bombay government states that Sir Creek is navigable most of the year. Sir Creek is navigable most of the year, and according to international law, a boundary can only be fixed and according to international law, a boundary can only be fixed in the middle of navigation channel. Right? So this is the basis of India's claim. बॉम्बे गवर्नमेंट, जुडिशियरी, बॉम्बे गवर्नमेंट 1914 में ब्रिटिश थे ना, 1914 ब्रिटिश थे ना, तो बॉम्बे प्रोविंसेस सब उन्हीं की दी हुई है, वो उलझा कर ही गए इसीलिए. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, on the basis of this India claimed that, अब ये नेविगेशन ऑल ऑफ द सीजन है, नेविगेशन में समझते हैं, नेविगेट नाव आना जाना कनेक्टिविटी, ये कभी रुकता नहीं है ऑल सीजन. तो इन बिटवीन द चैनल तभी उसको बॉन्ड इंटरनेशनल ये कहता है दैट व्हेन एवर देयर इज एन, इफ इट इज एन always a navigation, so the boundary would be between that channel. So according to that, Sir Greek has established that, and so India claimed the 1914 paragraph 10, and on the basis of that they claim it as their bond. Take next. Okay, next point. The paragraph 9 of the verdict, 1914 verdict, the paragraph 9 of the 1914 verdict states that boundary between Kutch and Sindh lies to the east of creek. Sindh, Sindh, S-I-N-D, Sindh province, east of creek. तो अब यही क्लेम पाकिस्तान कर रहा है.
हाँ, दिस इज अ क्लेम ऑफ पाकिस्तान. ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ 9 पाकिस्तान इज क्लेमिंग ईस्ट ऑफ क्रीक का जो बाउंड्री है दैट विल बी कंसिडर बाउंड्री एज एन बाउंड्री बिटवीन सिंध एंड क्रीक. नहीं, कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन देखिए, दो पैराग्राफ 1914 के वर्डिट पर है, दैट इज 9 एंड 10. So on the basis of 10 India claiming 10 क्या कहती है? That according to the river system which is a full year navigation, right? वहाँ बाउंड्री कैसे डिसाइड होगी? बिटवीन नेविगेशन चैनल के बीच में बाउंड्री डिसाइड होगी. तो इंडिया इस क्लेम पर on the basis of 10th paragraph they are claiming, right? On the basis of 9th paragraph Pakistan is claiming, which says that the boundary between Kutch, है ना, ये कच्छ है ना, and Sindh is from the east of creek line. This is green line, है ना. तो अभी जो आपका ये जो लाइन है ना, दिस इज ए क्रीक, इन्होंने बनाया मिडिल ऑफ द क्रीक में. तो पाकिस्तान 9th पैराग्राफ के बेसिस पर उस क्रीक लाइन के ईस्ट से क्लेम कर रहा है और इंडिया यहां से क्लेम. दिस इज द डिस्प्यूट. तो अंग्रेजों ने ऐसा बनाया है कि कंफ्यूजन बना रहे. नाउ डू यू गेट द पॉइंट? राइट, नाउ राइट डाउन. नाउ व्हाई दे आर मींस क्लेमिंग. टाइम हो गया? अच्छा, चलिए, then no issue, we will do in the next class. So next we will see the significance of this, then CEPC, CPEC, China Pakistan Economic Forum, then Pakistan will be over. Relations, India relations, Pakistan will be. आप फिर ये समझे कि ठीक है. चलिए, थैंक यू, enjoy the weekend.